Oh, loud. Am I not audible? अब ठीक है. अब ठीक है? Okay, great. So, Tamil Nadu. Tamil was the first language to be recognized as classical language of India. ये हमको पता है. Then there is Marina Beach in Chennai. That is the longest natural urban beach in the country. Natural urban beach है. And then 3 biosphere reserves under UNESCO's World Network of Biosphere Reserves. ये 3 क्या है, कोई बता सकता है? एक तो नीलगिरी वाला हो गया, दूसरा वो सत्यमंगलम वाला था ना? वाला नहीं मैं बता वाला है दूंगी. जो श्रीलंका के रास्ते. हाँ गल्फ ऑफ मन्नार. करेक्ट, गल्फ ऑफ मन्नार है. ओके, मैं बता दूंगी. एक है नीलगिरी, दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार, एंड थर्ड वन इज अगस्त्य मलई. ओके, तो ये आई विल जस्ट टेल यू ब्रीफली on Western Ghats that is bordering Tamil Nadu. Nilgiri is the starting point, Agastya Malai is the ending point. ठीक है, ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व्स में है, एंड द अदर वन इज गल्फ ऑफ मन्नार. ओके, ठीक है. मतलब साइड बाय साइड इट्स बेटर यू एवरीबडी राइट्स इट डाउन. सो डब्ल्यू एंड बी आर आगे आएगा भी ना, आगे स्लाइड्स में आएगा दिखाएंगे. आएगा. करेक्ट. ठीक है, फिर है तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर is the country's second defense industrial corridor after Uttar Pradesh. And next one hai Tamil Nadu is the yarn bowl of India. So it produces around 40% of the total yarn. It is true, मतलब lot of cotton is being produced. मतलब red soils में भी cotton produce कर लेते हैं यहाँ पे, and black soils में भी cotton produce कर लेते हैं. So it is बेसिकली मतलब एज सच कॉटन प्रोड्यूस करने से इम्पोर्टेंस नहीं है, यार्न बनाने पे जो धागा बनता है ना. करेक्ट. तो वो मतलब कॉटन तो ले आते हैं और फिर उसको यहाँ पे उसका वो धागा बनाते हैं, हाँ, फिर वो धागा फाइनली बनाते हैं. टेक्सटाइल के अंदर यूज होता है. Correct. So then there is it is home to highest number of factories in India. बहुत सारे सेज है यहाँ पे. थिंग इज लाइक तमिलनाडु में सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब तो कोस्ट पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे योर चेन्नई हो या फिर टैंजोर, एंड देर इज तिरुवनमलाई, and there is Kanyakumari. So all the border districts of Tamil Nadu has SEZs. Around 13 SEZs है Tamil Nadu में. And then it is the automobile capital of India and also among top 10 manufacturing hubs in the world. ठीक है, बुलेट का भी यहीं पे ही है. correct. Then so boundaries. So it is bordered by 3 states and 1 UT. 3 states पता है ना, Andhra, Karnataka and Kerala, and 1 UT is Puducherry, Karaikal. So, and it shares a maritime border with Sri Lanka. Maritime border है. Then comes your relief features. हाँ, so यहाँ पे they have given Nilgiri Mountains, Kanyakumari, Gulf of Mannar, Park Bay, Park Strait. So it is bounded by Eastern Ghats on the north, Nilgiri Mountains and Kerala on the west, Bay of Bengal in the east, and Gulf of Mannar and Park Strait on the southeast, and Indian Ocean on the south. Kanyakumari is the southernmost tip of the Indian peninsula, meeting point of Arabian Sea, Bay of Bengal, and Indian Ocean. ये कन्याकुमारी इज अ डिस्ट्रिक्ट. ओके, आई जस्ट टेल यू, कन्याकुमारी के ठीक ऊपर देर इज अनदर डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड तूतकुड़ी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूटिकोरिन. ओके, इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, मतलब आगे थोड़ा समझ में आ जाएगा हमको. ठीक है, लेट्स गो फर्दर. नेक्स्ट स्लाइड. So Precambrian rocks with mineral assemblages of high temperature and pressure are well exposed to Tamil Nadu. Oldest rocks formed in Precambrian era about 4 billion years ago and formed due to solidification of molten magma known as the basement complex, as they are oldest and forms the base for new layers. Okay, let's go for next one. ठीक है, this is relief features.
So basically, western, southern, and northwestern parts are hilly and rich in vegetation. So basically, Tamil Nadu को ऐसे देख सकते हैं. You have eastern Ghats, you have western Ghats, and you have coastal plains, and you have normal plains, and you have plateaus as well. Okay. So Tamil Nadu has all of them. So ये ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे राइट में हमको तीन छोटे छोटे स्ट्रेट पैचेस दिख रहे हैं ना. दोज आर द ईस्टर्न घाट्स इफ यू कैन सी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तीन पैचेस हैं. हाँ हाँ. So and the ones Sanjay has blocked on the west, no, वो tri junction है, that is Nilgiri. Anyways, we can see that in the next slides also. So western, southern, and northwestern parts are hilly and rich in vegetation. Eastern parts are fertile coastal plains, and the northern parts are mix of hill and plains. Then central and south central regions are arid plains and receive less rainfall than the other. So actually, west part of Tamil Nadu receives good rainfall, and eastern part of the Tamil Nadu also receives good rainfall. But ये जो बीच में है ना, वहाँ पे they are arid regions. Western part इसलिए हमको like we get southwest monsoon, and eastern part में northeast monsoon also helps in giving rainfall. लेकिन बीच में जो area रहता है वो arid रह जाता है. Rain shadow. Exactly, it's a rain shadow region. Okay, so these are the hills and peaks. So let's understand these hills and peaks in terms of western Ghats and eastern Ghats. So let's go with western Ghats first. So western Ghats में from north to south, if you can see, there is Nilgiri Hills, there is Kunda Hills, then Velliyangiri Mountains, then उसके बाद है Palani, Anaimalai, Varshanad, and Agastyamalai. So these are the western Ghat ranges, I mean western Ghat hills. So ये नीलगिरी और अनैमलाई के बीच में you can see a huge gap. So can anybody tell what gap that is? Palghat. Correct. Palakkad or Palghat. Correct. So that is Palghat gap between Nilgiri and Anaimalai hills. फिर Anaimalai hills के नीचे there is Palani hills. ठीक है? Just below Anaimalai hills there is Palani hills. And guys, Sanjay, if you can open any other map which gives proper relief features, is it possible? बस नीलगिरी हिल्स का दिखा देना है. Meanwhile, I'll keep telling you, Nilgiri Hills is the tri-junction of the three states, that is Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu. वहाँ उस tri-junction पे Nilgiri Hills हैं, and the highest peak of Nilgiri Hills is Doddabetta. We know Doddabetta National Park also. So there's a tiger reserve also. So Nilgiri Hills का highest peak है Doddabetta, and वहीं पे नीलगिरी हिल्स में ही ऊटी है, कुन्नूर है, एंड या उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था ना नीलगिरी के ऊपर, क्या क्या है उसमें प्रोटेक्टेड एरियाज. राइट. इनफैक्ट नीलगिरी में सत्यमंगलम भी है, एंड देयर लॉट ऑफ, दैट्स व्हाई इट्स अ बायोस्फीयर रिजर्व ना. लॉट ऑफ टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व भी है शायद. ओके. तो ये बेसिकली बाउंड्री दिख रहा है. मधुमलाई वाला जो है ना वो ट्राई जंक्शन है.
तो यहाँ पे Correct. केरला टच कर रहा है, मधुमलाई के जस्ट ऊपर कर्नाटका है, और मधुमलाई खुद जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। उसके Correct. नीचे कोयम्बटूर है, जिसकी हम बात कर रहे थे, पालघाट या Correct. पलक्कड़, Exactly. ठीक है, तो ये वो गैप है। That is the gap. ठीक है. And let's go back to yeah. थोड़ा और zoom out करना है यार. ठीक है. I can see Dindugul in picture. Dindugul is famous Yes. Locks. for. है? Dindigul, Dindigul. ये अटैक में है। ठीक है. So हाँ, let's go back to this thing. PDF में चलते हैं. ठीक है. तो ऊपर है नीलगिरी एंड नीलगिरी के ठीक नीचे है अनैमलै, बीच में जो है दैट इज पालक्कड़ पास और पालघाट पास. एंड उसमें like we talked about, the highest peak of Nilgiri is Doddabetta, and Nilgiri में you have Mukurti National Park and Mudumalai National Park, and then the animal which is endemic to Nilgiri. नीलगिरी तार। Correct. Nilgiri Thar. Then after Nilgiri, you have Anaimalai. Niche. Anaimalai, it is a border of Tamil Nadu and Kerala. It borders Tamil Nadu and Kerala. I mean, see, Nilgiri and Anaimalai, they run north to south. ये सारे western ghats सब north to south, they run from north to south, but there are two western ghats which are eastern extension of western ghats. मतलब they run from west to east. Those are Palani Hills and Varshnad Hills. Can you go to the next slide? Next one. Next one. Next. अच्छा अच्छा. अरे हाँ, just go back 4 slides. Go back. One more. हाँ, just have a look at here. ये नीलगिरी की ट्राई जंक्शन है, नीलगिरी, ठीक है. उसके नीचे there is अगस्त्य मलई, and the one which is protruding out ना, ये parallel में the second box, that is Palani Hills. उसके नीचे again you can see running parallel to Palani Hills, ऊपर वाला और ऊपर, हाँ, that is Palani. Okay, उसके नीचे है, yes, that one is, हाँ, नहीं, Palani, that is Palani, what you have blocked right now. उसके नीचे है Varshnad, that's Varshnad, correct, that is Varshnad. ठीक है. So they are eastward extensions of Western Ghats, Varshnad and Palani Hills. ठीक है. ये Palani Hills और Varshnad के बीच में again part of Western Ghats running north and south is Cardamom Hills. इसमें लिखा नहीं है, बट Palani और Varshnad के बीच में है Cardamom Hills. ठीक है. Then below Varshnad there is Agastya Malai. इसमें देखना है क्या कार्डमम? हाँ, देख लेते हैं, that's better. या फिर कोई मैप मिल सकता है rather than going to this, कोई अच्छा मैप which shows features. कल अपन ने वो कार्डमम भी देखा था ना सिक्किम में. कार्डमम, हाँ, खेती देखी थी, मेरा कार्डमम हिल्स। तो यहाँ कार्डमम पे ना, एक है तो कार्डमम. हाँ, उसके ऊपर है Palani Hills. ये अनैमुड़ी, I forgot to tell you, Anaimudi is the highest peak of Anaimalai. It is a peak, highest peak of Anaimalai, and actually it is the highest peak of South India. Highest peak of South India. और वेस्टर्न घाट्स. Correct. वेस्टर्न घाट्स. Western Ghats. अच्छा, it's not. Eastern Ghats में कोई और highest peak है क्या?
झिंगागाड़ा पीक था। Which one, जिंदागढ़, sir? उड़ीसा। Okay. झिंगागाड़ा। हाँ हाँ सही Okay. बोले। और दोडा बेटा सेकंड है ना वेस्टर्न घाट्स में। Dodabetta is second. First is Anaimudi. ओके, वन थिंग अबाउट पलानी हिल्स। पलानी हिल्स में एक नेशनल पार्क भी है जो केरला में पड़ता है, पाम्बाडुम शोला। करेक्ट। हाँ, वो वेम्बडी शोला पीक है, सॉरी वेम्बडी शोला पार्क है। यहाँ पे लिस्ट में पाम्बाडुम शोला दिखा है, पाम्बाडुम, ओके एनविस का लिस्ट में। ओके ओके, आई विल चेक दैट अगेन। तो हाँ, लेट्स कंटिन्यू। मैं बस बताती जाऊंगी। पलानी और वर्षनाड के बीच में है कार्डमम हिल्स। देन वर्षनाड के नीचे है अगस्त्यमलाई। Agastyamalai also runs from north to south. There are only two hills which are running, which are the eastward extensions. One is Palani, the other one is Varshanad. Okay. Then, okay. At Cardamom Hills, there is a meeting point of Anaimalai, Palani and Cardamom. ये Anaimalai, Palani and Cardamom जहाँ पे meet होते हैं, there is one hill that is Anaimudi, that is the highest peak. So Anaimudi itself means, Mudi means is it's a knot. ठीक है। Anaimud, Anai is elephant. I mean, basically we call it Anaimalai. It is Anaimalai means elephant hill. Malai means hill. So Anaimudi is knot. जहाँ पे तुम्हारे Palani, Anaimalai and Cardamom. These three meet at a point and it is Anaimudi. Then the rivers which flow. सॉरी दीप्ति, सॉरी इंटरप्ट। वो एक्चुअली पलानी और अनामलाई मीट करते हैं यानी अनाईमुदी पे, लेकिन अनामलाई वर्षनाथ से मीट करता है। वो कोटा मलाई करके है, वो अलग हिल है। दीज टू आर डिफरेंट। Anaimudi does not meet Varshanad, no? क्यों? Sorry, Anaimalai does not meet Varshanad, no? Because बीच में Palani है, Cardamom है. How can Anaimalai meet Varshanad? ओके, आई एम नॉट श्योर। एक बार मैं एडजस्ट नहीं देख रहा था ये वाला। Right. आई एम Okay. शेयरिंग द इमेज, एक बार देख लेना एडजस्ट का, मैं इमेज शेयर कर रहा हूँ वाला। ठीक है, ठीक है। ये अनैमुडी केरला में है। Anaimudi is on the border. अच्छा, But I think तमिलनाडु में ही है शायद, because मैं तो वो केरला ही सुनाई देता। मतलब उनका कोई ये भी है ना रामसर साइड, वो भी Okay. केरला ही दिखा रहे हैं। हाँ, केरला में है। Right, right. ठीक है। So that's about it. And यहाँ पे Anai Peak is the Anaimalai Hills, is the highest mountain in peninsular India. Lower peaks of Eastern Ghats and their outliers locally called the Javadi. हाँ, we'll get to the this thing once we finish Eastern वाला. So then comes Varshanad Hills. Then Varshanad again is the eastward extension. इसमें highest peak है Meghamalai, and and there is a grizzled squirrel wildlife sanctuary in Varshanad, and it is in Srivilliputtur. And through Varshanad, Vaigai River originates. ठीक है? So let's revise again, north to south, Western Ghats. नीलगिरी, उसके नीचे है आनैमलाई। ये कुंडू और वेलंगिरी दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। सो नीलगिरी, आनैमुडी, देन वर्षनाड, सॉरी नीलगिरी, आनैमुडी, एंड उसके नीचे है पलानी। पलानी के नीचे है कार्डमम, कार्डमम के नीचे है वर्षनाड, एंड वर्षनाड के नीचे है अगस्त्यमलाई। So this is western. Total there are seven hills. So then there is Eastern Ghat hills. One more thing, in Agastyamalai is also called the Southern Kailas. Okay, Southern Kailash. And Palakkad Mundanturai Tiger Reserve is in Varshanad Hills. I'm sorry. Sorry. Agastyamalai is also called Kailas, and
Kalakkad Mundanturai is in Agastyamalai, not Varshnad, Agastyamalai. Kalakkad Mundanturai Tiger Reserve. Okay. So we have seen like Nilgiri is one biosphere reserve, and the last one, Agastyamalai, is another biosphere reserve. So northmost and southmost, these are the biosphere reserves. And uske niche hai Gulf of Mannar, that's another biosphere reserve. Then there is Mahendragiri Hills in Agastyamalai. ठीक है. ओडिशा में एक और महेंद्रगिरी हिल्स है. We should not get confused. There are two Mahendragiri Hills, one in Tamil Nadu as well. यहाँ पे Mahendragiri Hills in Agastyamalai, इसमें ISRO propulsion complex है. ठीक है. That's about it. And ये Western Ghats में there are 3 passes. One is Palghat, that is the main one. And Palghat के अलावा एक Senkotta pass है, that is between Varshnad and Agastyamalai Hills. There is another pass, Varshnad and Agastyamalai Hills. And there is Aralkaimoli pass, that is again Agastyamalai के पास है. So this Aralkaimoli, that is a place where windmills, they have a lot of windmills over here because it is a pass, right? So these southwest winds help in establishing these windmills. Okay. And there is if you can see between Anaimalai and Varshnad, there is a Kamban Valley. Okay. Sorry, not Anaimalai, this is Palani and Varshnad के बीच में है Kamban Valley. Palani and Varshnad के बीच में. So because there Palani is eastward hills and Varshnad is eastward hills, बीच में एक valley form होगा, that is Kamban Valley. It's I think it's the largest valley in South India, something like that. So then let's go to Eastern Ghats now. ये Eastern Ghats में है Jawadi Hills and Chevroy Hills, Jinji and Kalvarayan. So Kalvarayan. So Jawadi Hills, they are in Vellore district. मतलब almost you can say Chennai के पास कह सकते हैं. So Jawadi, I mean it is touching Andhra and Karnataka border, Jawadi Hills. So ये Vellore district में है. Then उसके बाद Chevroy, basically it is called Servarayan Hills. So probably English did not know how to pronounce, so they made it Chevroy Hills. So this is in Salem city. And Jinji Hills, if you remember Arcot from history. So Jinji is the erstwhile Arcot. So that's why probably it was easy for them to go to Mysore or Nizam. So Jinji is erstwhile Arcot. Okay, and then उसके नीचे है Kalvarayan Hills. Kalvarayan, and उसके नीचे है Pachmalai. Pachmalai मतलब Pach मतलब green. Malay matlab, so Pachmalai is called, they're called green hills. So there's a lot of greenery, probably that's why they have called it Pachmalai. Then, okay, so that's about it. And then we have seen Western Ghats and Eastern Ghat Hills. Peaks भी देख लिया हमने. Then एक बार peaks भी देख लेते हैं. Nilgiri Mountains, उसके नीचे है Anaimalai, then उसके नीचे है Agastyamalai. And then Cardamom Hills यहाँ पे दिया है, but I'll again just repeat. Cardamom Hills is between Palani and Varshnad. Okay. Then there is Javadi Hills, then there is Chevroy, Pachmalai, then Sirumali and Palani. Palani Hills is from Western Ghats. Okay. Eastern Ghats में सिर्फ you have only Javadi and Chevroy and Pachmalai. ठीक है, next. ये पढ़ना है क्या? 1 मिनट पढ़ लेते हैं. So highest peak of Western Ghats runs along the western border. Western Ghats and Eastern Ghats meet at Nilgiri Hills. Correct. उसके नीचे जो मतलब गैप हमको दिख रहा है वो है पालकड पास.
And then Western and Eastern Ghats meet at Nilgiri Hills. Western Ghats traverse the entire western border with Kerala, effectively blocking the much of the rain-bearing clouds of the southwest monsoon from entering the state. So एक और बात ये है, Tamil Nadu receives its rainfall mostly from northeast monsoon and not the southwest monsoon because it's in the rain shadow region. Okay, next. ठीक है, drainage system. So let's divide Tamil Nadu into three parts. One which is above Kaveri and the one which is below Kaveri. So above Kaveri you have northern region जहाँ पे Ponnayar, Palar and Cheyyar, these are the rivers flowing. ये कावेरी डेल्टा के ऊपर है. नॉर्थ से देखो पालार एंड उसके नीचे है पोन्नयार एंड चेयार इज वेरी, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन चेयार इज जस्ट अबव कावेरी एंड पोन्नयार के नीचे. ठीक है, ये पोन्नयार एंड इट राइजेस फ्रॉम नंदी हिल्स विच इज इन कर्नाटका, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, कूर्ग से दिस पोन्नयार राइजेस एंड इफ यू रिमेंबर आंध्रा में एक और रिवर पास होता है पेन्नयार और पेन्नेरू और whatever that is. So that also rises from Nandi. So Pennayar in Andhra is called Uttar Pinakini. Hello. Hello. दीदी के माइक से दे दे. अच्छा, ठीक है. सो वो उसको उत्तर पिनाकिनी कहते हैं और ये पेन्नयार, दिस इज कॉल्ड दक्षिण पिनाकिनी. ठीक है, एंड एक बार पढ़ लेते हैं. कावेरी raises in Talakaveri in Kodagu also called Coorg, and Talakaveri and Karnataka, and flows through Tamil Nadu before emptying into Bay of Bengal. So third largest river है after Godavari and Krishna and largest in Tamil Nadu, and उसका distribute है Kolledam. कोल्लीडम इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी. सो ये इसमें ज्यादा दिखाया नहीं है बट कावेरी हैज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज. सो आई मीन इट फॉर्म्स अ वेरी गुड डेल्टा. In fact, the main Kaveri river, it completely becomes insignificant before going into Bay of Bengal. It almost goes as a small stream. तो उतना बड़ा डेल्टा फॉर्म होता है वहाँ पे. And that Kaveri Delta region, it has places like Tanjore, Nagapattinam. So Tanjore coast, if you remember, जहाँ पे salt law break किया गया है. So that is in this Kaveri Delta area. These are very fertile areas. ठीक है, Kaveri Delta में Nagapattinam भी है and there are other places as well. So what we are seeing is, we are seeing northern part of Kaveri, southern part of Kaveri and central part is drained by Kaveri. तो ये central region में Kaveri and and its distributaries, they flow through ये Salem, Erode करके कुछ places है which are bordered with Karnataka. हाँ, left में Salem, Erode, Karur, those regions are there, and as it reaches its delta के पास Tanjore है, Nagapattinam है. So these are the regions Kaveri flows through. Then comes your south to Kaveri. There are three rivers again: Vaigai, Vaipar and Tamirabharani. Vaigai, नीचे है Vaipar and उसके नीचे है Tamirabharani. तो नॉर्थ रीजन में है three rivers: Ponnayar, Palar and Cheyyar. ठीक है, एंड सेंट्रल रीजन में कावेरी है एंड उसके नीचे थ्री अदर रिवर्स आर वाइगई, वाइपार एंड तामिरभरणी. देन वी हैव कोरोमंडल कोस्ट विच रन्स फ्रॉम चेन्नई टू कन्याकुमारी. ठीक है, देन हाँ, सो रिवर सिस्टम में ये मैंने बताया. तो आई जस्ट क्विकली टेल कि which rivers are originating at which places. ठीक है, पालार एंड पेन्नयार, both of them originate from Nandi Hills. ठीक है, एंड वेल्लार
वेलार ओरिजिनेट्स, वेलार है क्या वहां पे? ठीक है, वी हैव देयर इज अनदर रिवर जस्ट अबाउ कावेरी, अनदर रिवर कॉल्ड वेलार. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शेवरॉय हिल्स. ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है. फिर कावेरी है. कावेरी के ट्रिब्यूटरीज, आई मीन कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम नंदी एंड उसके ट्रिब्यूटरीज हैं. देयर आर ट्रिब्यूटरीज इन कर्नाटका एंड देयर आर ट्रिब्यूटरीज इन तमिलनाडु एज वेल. सो कर्नाटका के ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर हरंगी, हेमावती एंड शिमसा एंड अर्कावती. एंड वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर लक्ष्मण तीर्था, कबिनी एंड सुवर्णवती. So these are the tributaries in Karnataka. They have nothing to do in Tamil Nadu. Tamil Nadu mein there are only 3 tributaries, that is Bhavani, Amaravati and Noyal. Can you see Bhavani, Amaravati and Noyal? Yes. Right. So this Noyal river, it is located on a place called Tirupur. ठीक है. I think if anybody knows, Tirupur is famous for textiles. So this Noyal river is completely polluted because of textiles. If there is a river which got polluted because of textiles, there is Noyal river. ठीक है. Then this Bhavani, it originates in Nilgiris. Amaravati originates in Palani Hills and Noyal originates in Vellangiri. ठीक है. Then so this Kaveri, it forms a delta in Tanjore, that is Tanjore, and it drains after forming a delta, it drains in Pumpuhar. If anybody knows, Pumpuhar was probably one of the ports of Cholas. Okay, Puhar karke shayad we might have read. So that's about it. And yeah. On Kaveri River, there is a dam called Mettur Dam. Okay. Just when it enters Tamil Nadu, when Kaveri enters Tamil Nadu, there's a dam called Mettur Dam, and उस dam के ऊपर है Hogenikal Falls, Hogenikal waterfalls. Okay. एक बार पढ़ लेते हैं. Rising in Talakaveri, Kaveri rises in Talakaveri, it's in Kodagu, Coorg. Then it's ये भी हो गया है. And Ponnayar originates in Nandi Hills, Ponnayar, and Chikkabalapur district of Karnataka, and flows through Tamil Nadu before emptying into Bengal. It's also called Tenpennai or Pennayar or Dakshin Pinakini. Okay. ठीक है. Then Palar River rises in Nandi Hills in Karnataka. From water from Palar Anicut is diverted to Pundi Reservoir in Kosasthalayar River Basin and Chembrambakam Lake, located in Adayar. So if you remember, if anybody visits Chennai, you will find Adayar, a place called Adayar. So this is exactly in Chennai. So these two reservoirs, that is Pundi Reservoir and Chembrambakam Lake, so they are major water supply points to Chennai. After commissioning of Telugu Ganga project to supply Krishna River water to Chennai city, the dependence of Palar River water has reduced drastically. If you remember from Andhra state, we have Sri Shailam waters, they were getting diverted to the south, to Rayalaseema या फिर southern districts of Andhra. So वहां से ही Krishna waters को they are again तेलुगु गंगा के project के अंदर they were diverting it to Chennai. So it has become water supplier for Chennai. So उसमें that is called Telugu Ganga project. And उसमें क्या हुआ, because of the construction work, Jordan's cursor करके एक there's a bird.
हाँ, उसके लिए बहुत डेंजरस हो गया ये कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। So that is Palar river, and then Amaravati river, Noyal and Bhavani. These are the tributaries of Kaveri. So Amaravati begins in at Tamil Nadu Kerala border between Anaimalai Hills and Palani Hills, or matlab almost you can say Amaravati rises in Palani Hills, and it is the longest tributary of Kaveri, Amaravati. Where Noyal river rises from Velingiri Hills, Western Ghats in Tamil Nadu, tributary of Kaveri. Where Bhavani river, it originates from Nilgiri, enters the Silent Valley National Park. Can you see it entering Silent Valley National Park in Kerala? Correct. In Kerala, and flows back towards Tamil Nadu to join Kaveri again. Okay, that is Bhavani Hills. Sorry, Bhavani river. Then उसके नीचे है, we are done with Kaveri. उसके Kaveri के नीचे Vaigai river है. Vaigai river originates in Varshanad Hills and the Periyar Plateau of Western Ghat and flows northeast through the Kamban Valley. If you remember, I told you Kamban Valley between Palani and Varshanad. So through the Palani and Varshanad, Kamban Valley ke through Vaigai river flows, and to the north, and it empties into Park Bay. You can see Park Bay, right? Yes, that's Park Bay. उसके ऊपर है Park Strait. ठीक है, then Tamirabharani river originates from Agastya Kundam, or you can say Agastya Malai Hills, and it's in the peak. It's a peak of Western Ghats. So it originates from Tamirabharani, originates from Agastya Malai. Okay. So there is Mettur Dam we have spoken about. Mettur Dam is made on Kaveri River. Okay. And there is Satnar Dam. Satnar Dam is built on Pennaya River. Okay. And Bhavani Sagar built on Bhavani River, and Amaravati, again Amaravati River, and Vaigai Dam on Vaigai River. Except for ये Amaravati, Bhavani and Vaigai, they are named after their rivers. Mettur is on Kaveri River. And वैसे, can anybody name any other dam in Karnataka which is built on Kaveri River? ठीक है. So there is Krishnaraj Sagar Dam built on Kaveri. Okay, Krishnaraj Sagar Dam is built on Kaveri, and वहाँ पे exactly at Krishnaraj Sagar Dam, two tributaries of Kaveri, that is Hemavati and Lakshman Tirtha, they meet at Krishnaraj Sagar Dam. That's the reason the dam is built there. मतलब high flow of water रहता है वहाँ पे. Two tributaries are meeting at KRS Dam. And अलमाटी भी कृष्णा पे है क्या? हाँ, अलमाटी कृष्णा पे है. Correct. कर्नाटका में आता है. Correct. हाँ, Almaty Krishna पे है. Krishnaraj Sagar Dam is on Kaveri River. ठीक है. Then उसके बाद let's go to the next slide. ये इसमें एक और इंटरेस्टिंग वो था फैक्ट था कि कावेरी इज द ओनली रिवर जो साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से जो है वाटर लेके आती है. मतलब सॉरी, वाटर मिलता है उसको. से इसको सबसे बिजिएस्ट रिवर बोलते हैं इंडिया की. वो तो पेरेनियल बोलते हैं ना. ठीक है. Then हाँ, so you can see the soil types. एक तो we have lot of alluvial soils on the coast because lot of deltas भी है, and there are lot of rivers draining the coast. सारे alluvial soils हैं. Then बीच में black soils and red soil है. And in the central part you can see ये laterite soil जो है, they are plain areas. And so apart from the rich alluvial soil of the river delta, the predominant soils of the state are red soils and laterite soils.
Then black cotton growing soils known as Regur is found in parts of the central, west central and southeastern regions. तो ये black soils है. ठीक है. तो ये हमने डिस्कस किया है कि साउथ from the mostly depend on monsoon rains and thereby prone to droughts. So southwest monsoon gives only 32% of the rain, whereas northeast monsoon gives 48% of the rain. So ये southwest monsoon they get it during the months of June and September. So June and September जहाँ पे southwest monsoon पूरा इंडिया को rain मिलता है, but Tamil Nadu does not get so much of rain during that time. But during the time of northeast monsoon, that is October to December, they get better rain. Okay, and ranges from okay. So crops, major crops हैं. It's divided into 7 agroclimatic zones. Then I'll tell you the agroclimatic क्या क्या है. एक तो red soils वाला part, which has a lot of cotton, sugar cane and all. That is one part. And the one which is bordering with Andhra, that is another part. There and the green part, that is highly fertile area, that is Kaveri Delta. So and उसके नीचे उसके नीचे है Vaigai Delta and So the principal food crops are rice, jawar, bajra, ragi, and pulses. Cash crops include cotton, sugarcane, oilseeds, coffee, tea, rubber, cotton, and chilies. Important horticulture products are bananas and mangoes. If you remember, Tamil Nadu also gets mango showers. Okay. Then farmers shifted from maize to cotton due to fall army worm attack. ये मुझे नहीं पता. If anybody has any idea, can tell. पेस्ट था ये, और ये जो था मेज को बहुत ज्यादा अटैक करा था. Right. तो उसके वजह से they have shifted to cotton. Then 8 Kaveri Delta districts, including Tanjore or Tanjore, the rice bowl of Tamil Nadu, categorized as a special protected agriculture zone, and permission will not be given for हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स. ये बहुत रिसेंटली इन्होंने किया था, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही थी कि रिलायंस वगैरह को एक्सप्लोरेशन के लिए वो देंगे प्रोस्पेक्टिंग राइट्स. तो उस चीज़ को एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था. उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स को ने यहाँ पे ना चोलास के टाइम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फार्मर कम्युनिटी देखी थी. करेक्ट. वेलास करेक्ट. वो कम्युनिटी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, एंड उनके एक प्रेशर कह सकते हैं कि उसकी वजह से ये स्पेशल प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन का दर्जा दिया गया उनको. राइट. ठीक है. एंड हाँ ठीक है. Coal deposits of Tamil Nadu, 80% lignite coal reserves are found in Neyveli in South Arcot district. If you remember, South Arcot district was near Jinji. Okay. And magnetite ore, Salem and North Arcot. So yes, Salem, South Arcot, North Arcot, these are like somewhere lying between Karnataka and the coastal part of Chennai. तो कुछ सेंट्रल पार्ट में है. देन आयरन ओर, इफ यू रिमेंबर, सेलम इज आल्सो फेमस फॉर, मतलब इट्स स्टील प्लांट. इट हैज अ स्टील प्लांट एज वेल. सेलम की हल्दी भी होती है ना? सेलम की हल्दी आई थिंक सो, आई एम नॉट वेरी श्योर. एक और मतलब इन इसी स्लाइड में आई हैव सीन एड ऑन द टीवी प्रोबेबली सेलम की हल्दी. अच्छा, बट एक्चुअली इन दैट एरिया मतलब हाँ वेस्टर्न घाट्स में तो मतलब एक और प्लेस है जहाँ पे हल्दी फेमस है. ठीक है. तो देन देयर इज
Nilgiri and Salem are the main bauxite producing districts. ठीक है. Then oil refineries in Chennai and Nagapattinam, पता है हमको. Then Kaveri onshore basin oil fields in Tamil Nadu, Narimanam and Kovilapal, and molybdenum, graphite, dolomite, gypsum and thorium are other important minerals. ठीक है. Infrastructure known as major exporters of leather and leather goods. Textiles हमको पता है. Automobiles and components and software, and Tidal Software Park है. Then the town of Sivakasi is a leader in the areas of printing, fireworks and safety matches. It was fondly called as Little Japan by Jawaharlal Nehru. So ये Sivakasi is also one of the central regions of Tamil वैसे Nadu. देखा जाए तो बहुत छोटा टाउन है वो, बड़ा नहीं है. करेक्ट. ठीक है. ये कौन है ट्रेकरे मोरे? अच्छा, सेलम. ओके, लेट्स गो ऑन. नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं. ये काम तो नहीं है? ये हो गया ना? ठीक है. हाँ, पावर स्टेशंस. थर्मल पावर स्टेशन मेट्टूर डैम है. मेट्टूर डैम के पास ही थर्मल पावर स्टेशन है. देन देयर इज नॉर्थ चेन्नई एंड एन्नोर. ठीक है. एंड देन नेवेली एंड ट्यूटिकोरिन और तूतुकुड़ी. these places have thermal power stations. Then Kudankulam and Kalpakkam, these are nuclear power plants. And Muppandal is a wind farm. If you remember, I told you there is a pass below Agastya Malai. So उस पास के पास ही the pass is called Aral Kaimoli. अरल काईमोली पास के पास मुप्पंडल विंड फार्म है. ठीक है. एंड हाँ, कुंडलकुलम का अच्छा ये रहा. कुडंकुलम. हाँ, कुंडलकुलम रशिया की हेल्प से बन रहा है. कलपक्कम आई थिंक इंडिजिनियस ही है ना? नो आइडिया. एनीबडी हैज एनी इन्फो? इनमें से कोई एक शायद रशिया हेल्प कर रहा था बनाने में, शायद जहाँ तक मुझे याद है. कुंडलकुलम जो है वो रशिया हेल्प कर रहा है. हाँ. कलपक्कम का पता नहीं है, कोई देख के बता दे. यहाँ पे भी साइबर अटैक भी तो हुआ था कुछ. साइबर अटैक था कुंडलकुलम में. यहाँ इंडिजिनसली लिखा तो है कलपक्कम. कलपक्कम. राइट. हाँ, हाँ इधर लिखा है. कुंभकोणम में भी कुछ है ना? कुंभकोणम न्यूक्लियर है में ना? क्या है? न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर. ओके. मतलब क्या न्यूक्लियर है? और प्लांट बनाएगा. कुदानकुलम हो गया ना, कुछ और नाम बोला ना उन्होंने. कुंभकोणम. ये कुछ और कुंभकोणम इज ऑन द कोस्ट, इतना तो पता है. मतलब ये नागपट्टनम, कुंभकोणम, दीज आर ऑल मतलब नियर बाय प्लेसेस. ठीक है. याद आया तो बता दूंगी कुंभकोणम में क्या है. एन्नोर पोर्ट एंड हाँ, सो पोर्ट्स है एन्नोर पोर्ट and Kamarajar Port Limited, formerly Ennore Port, located on the Coromandel coast and handles all coal and ore traffic in Tamil Nadu. Then there is Chennai Port. It is second largest container port of India after Mumbai. Mumbai's Navasheva. Navasheva. Okay. An artificial and all-weather port and with wet docks. This is Chennai Port, and you have V.O. Chidambaram Port Trust, formerly Tuticorin Port, second largest port in Tamil Nadu and fourth largest container terminal in India. Does anybody remember who V.O. Chidambaram is? Yes. वो स्वदेशी मूवमेंट के अंदर इन्होंने स्टीम इंजन कंपनी बनाई थी. Correct. बट अंग्रेजों ने उसको बंद करा दिया. Correct. हाँ, this is the same guy. Then Kolachal International Seaport,
also known as NIM port, is proposed and located in Kolachal, Kanyakumari. ठीक है. Then Ennore LNG pipeline. So India's first East Coast LNG import terminal at Ennore. Then part of India's plan to raise the share of natural gas in country's energy basket to 15% by 2030 from current 6.2%. So pipeline from the terminal will go up to Madurai, Tirchi and Tuticorin. Here is Madurai. This Ramanathapuram is where your Vaigai river flows into the. APJ अब्दुल कलाम का कौन सा था, रामेश्वरम था क्या? हाँ, रामेश्वरम रामेश्वरम था। करेक्ट. रामेश्वरम कन्याकुमारी के पास है. कन्याकुमारी इज द सदर्न टिप. ठीक है. दिस इज रामनाथपुरम. ठीक है. Pipeline from the terminal will go up to Madurai, Trichy, Tuticorin in Tamil Nadu and branch out to Bengaluru via Hosur in Karnataka. So ये I think ये defense corridor भी, these are the places which are included in defense corridor. जैसे like you know defense corridor has Hosur in Karnataka, Chennai, Salem, Coimbatore and Trichy. Tirchi, you can see Tirchi here. Salem is just northwest of Tirchi. That is Salem. Northwest of Tirchi. Okay. Anyways, let's move. So these are basically the industrial areas of Tamil Nadu. Then Golden Quadrilateral पता है हमको, Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai. Next. Infrastructure economic corridors. इसमें you can see East Coast Economic Corridor from Kolkata to Chennai and again Chennai to Kanyakumari. Then CBIC है Chennai Bangalore Industrial Corridor and वैसे हाँ फिर Bangalore Mumbai Economic Corridor है. Then Western Dedicated Freight Corridors. वैसे Freight Corridors there are two, Western Dedicated and Eastern Dedicated. Then East Coast Economic Corridor है. Then Mumbai Bangalore. Then Chennai Bangalore. Chennai Bangalore का है Industrial Corridor. ठीक है. And then East Coast Corridor runs up to Kanyakumari. Okay. Next. ठीक है. And economic corridors, Kolkata Visakhapatnam KVIC and CVIC है Chennai Visakhapatnam Industrial Corridor and then Chennai to Kanyakumari Industrial Corridor भी है and that's it. These are the industrial corridors. Kolkata, Visakhapatnam, Chennai and Kanyakumari. Then there is National Park. So Mudumalai National Park, you remember, right? It's in Nilgiri. Mudumalai उसके पास ही मुकुर्ती National Park भी है. ठीक है. इसमें I think it's not given. हाँ, it's given. Both of them, Mukurti and Mudumalai, are in Nilgiri. फिर Anemalai National Park is in Anemalai Hills. Then Mudumalai lies on the northwest side of the Nilgiri Hills. Also shares its boundaries with Karnataka and Kerala. Construction activities of the proposed India-based Neutrino Observatory likely to have significant impact on the local wildlife. ठीक है. ये मतलब लास्ट में भी आएगा. We can read more about this Neutrino Observatory. Then this is in Nilgiri. And Anemalai National Park or Indira Gandhi National Park. It is it also has Anemalai Tiger Reserve. Okay. And there's Gindi National Park. If you remember, I told you that Chennai IIT Madras is inside Gindi.
तो आप IIT मद्रास में जाओगे तो यू कैन फाइंड ऑल डियर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स. तो द IIT मद्रास इटसेल्फ इज इन गिंडी नेशनल पार्क. ठीक है. फिर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, that is protected area consisting of 21 small islands and adjacent coral reefs in Gulf of Mannar in Indian Ocean. So core area of Gulf of Mannar Biosphere Reserve. Then there is Mukote National Park. ये हमने देखा है वहाँ पे Mukote National Park. So there are total 5. तो वैसे हाँ, it is created to protect its keystone species Nilgiri tar. So Mukote National Park is made to protect its keystone species Nilgiri tar, and also UNESCO World Heritage Site as part of Western Ghats. Next. Okay, wildlife sanctuaries. So ये will come from west. Satyamangalam Wildlife Sanctuary है. It is in Nilgiri, and Mudumala is also in Nilgiri itself. तो ये सत्यमंगलम नेशनल वाइल्ड नेशनल रिजर्व के अंदर आई थिंक बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज ऑल्सो देयर. देन उसके नीचे आनैमलाई इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, सॉरी इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. देन उसके नीचे है ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. तो दिस इज पर्टिकुलरली मेड टू protect grizzled squirrel. And then there is Mundanturai and Mundanturai Wildlife Sanctuary and Kanyakumari. So if you remember, Mundanturai is in Agastyamalai. Okay. Palakkad Mundanturai is in Agastyamalai and Kanyakumari uske niche. Then east mein you can see Pulicat, you know, Pulicat Wildlife Sanctuary. उसके नीचे है वेदांतंगल. ये वेदांतंगल इज इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड चंगलपट्टू, जस्ट बिलो चेन्नई. ठीक है, चेन्नई के पास है वेदांतंगल. देन ये ग्रिजल स्क्विरल, ये यहाँ पे लिखा है वैसे, दिस इज इन द वेस्टर्न घाट्स, ऑल्सो नोन एज श्रीविल्लिपुत्तूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. ठीक है, एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल ग्रिजल जाइंट स्क्विरल. तो ये ग्रिजल स्क्विरल वाइल्ड लाइफ sanctuary is in Srivilliputtur. Then Kanyakumari Wildlife Sanctuary, it's a tiger habitat. 7 rivers originate in the forest, including the Tamirabarani River and Parali River. So ये Tamirabarani, we saw this like one of the major rivers है. कृष्णा के कावेरी के नीचे Tamirabarani, Vaigai है, and Vaipar, Vaigai and Tamirabarani. Tamirabarani is the last one. ठीक है, सो ये कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. तो उसके नीचे है पॉइंट कैलिमेर. और कोडक्करे. तो पॉइंट कैलिमेर इज वेयर आई थिंक कावेरी ड्रेन्स, है ना, जस्ट इट्स ऑन दैट टिप, वो जो बाहर निकल रहा है ना वहां पे. करेक्ट, हाँ करेक्ट, दैट इज पॉइंट कैलिमेर. ठीक है, 1 second. Probably that is the reason it is called point. Correct. Then uske then below that is Gangaikonda Spotted Deer Sanctuary, again made to preserve spotted deer. And Vallanadu Blackbuck Sanctuary, made to protect Vallanadu Blackbuck Sanctuary, to protect blackbuck. And next, Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary, only site to be declared as a Ramsar site in Tamil Nadu. तो यहाँ पे actually the soil is peat soils कहते हैं ना, वो मिलता है. That's why it is a Ramsar site. And चलते हैं आगे.
नेक्स्ट, ठीक है। दीज आर टाइगर रिजर्व्स। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पता है हमको, एंड मुदुमालाई टाइगर रिजर्व पता है, आनैमलाई टाइगर रिजर्व, एंड कलक्कड़ मुंडनतुरई अगस्त्यमलई में है। तो आनैमलाई अर्लियर नोन एज इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क, and previously as Anaimalai Wildlife Sanctuary is a protected area located in Anaimalai Hills. Okay, then Satyamangalam, part of Project Tiger and Project Elephant conservation programs. Man-animal conflicts are common, especially with elephants and leopards. Home to indigenous tribal people belonging largely to the Irula tribe, also known as the Urali and Soliga communities. Then Kalakkad Mundanturai Tiger Reserve. It is part of Agastyamalai biosphere. So you have to remember this Kalakkad Mundanturai. So Agastyamalai Biosphere Reserve के अंदर है ये. Next. अच्छा, एक टाइगर पार्क मिसिंग है, टाइगर रिजर्व मिसिंग है यहाँ पे, Which one? श्रीविल्लीपुतूर। Srivilliputtur Tiger. Yes, you're right. Correct. रिसेंटली बना है वो। Correct. ठीक है। फिर एलिफेंट रिजर्व्स, तो फ्रॉम नॉर्थ यू कैन सी रायला एलिफेंट रिजर्व, ये आंध्रा में है। रायला एलिफेंट रिजर्व मतलब रायलसीमा में है इसलिए शायद। देन देयर इज मैसूर एलिफेंट रिजर्व, एंड उसके नीचे है वायनाड एलिफेंट रिजर्व, उसके नीचे है नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, देन उसके नीचे है नीलंबूर एलिफेंट रिजर्व विच इज इन केरला, नीलंबूर, एंड उसके बगल में कोयम्बतूर, your Palghat Pass, Coimbatore Elephant Reserve. Okay. Okay. Then Anaimalai Nelimpati High Range Landscape, ये Anaimalai Elephant Reserve and Anaimudi Elephant Reserve है ये. Though Anaimudi is in, like you said, it is in Kerala. पेरियार अगस्त्यमलई लैंडस्केप है, ये एक है पेरियार एलिफेंट रिजर्व, दूसरा है श्रीविल्लीपुतूर एलिफेंट रिजर्व। टाइगर रिजर्व भी है शायद। हाँ, अभी बना है श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। करेक्ट, आई थिंक राइट। ठीक है, आगे। देन लेटेस्ट वाला कौन सा है, वो विषधारी कौन सा है? रामगढ़ राजस्थान, राजस्थान वाला रामधारी रामगढ़ विश्वधारी। हाँ, उससे जस्ट पहले ये बना था श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है एंड अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व। Nilgiri subcluster is a part of Western Ghats, which was declared in World Heritage Site by UNESCO in 2012, and Agastyamalai under UNESCO's World List of Biosphere Reserves became part of World Network of Biosphere Reserve 2016 में. Where Gulf of Mannar marine ecosystem with seaweed, seagrass communities, then coral reefs, salt marshes, and mangrove forests. First marine biosphere reserve in India. ठीक है, नीचे. We also know that there are 3 mountain railways in India. They are Darjeeling, one is Darjeeling Himalaya, दूसरा है कालका शिमला, तीसरा है ये नीलगिरी माउंटेन में. I think it is in Kodaikanal. ठीक है. And group of monuments at Mahabalipuram built by Pallava kings. ये मंडपा, रथास, descent of Ganga आप सबको पता है. Town has gained prominence under the ruler of Mamalla and carved out of a rock along the Coromandel coast. The temple town has approximately 40 monuments, including the largest open air base relief in the world, inscribed as the cultural heritage site. See, if you see descent of Ganges, it's just a wall. मतलब relief है और कुछ नहीं. Okay, next. ट्रेन इसके अलावा ये हमने और कहाँ कहाँ देखी है नैरो गेज वाली ट्रेन?
वो इसमें तो उधर शिमला में नॉर्थ में। हाँ, दार्जिलिंग। शिमला में और दार्जिलिंग 3 जगह है। हाँ 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 राइट। और ये वाइजैग में भी है ना कहीं पे? नहीं नहीं, वाइजैग नहीं, में तो वाइजैग अरकू है। वैली अरकू। नहीं, वाइजैग में नहीं। इंडिया में ये 3 ही जगह है बस। अच्छा, वो टॉय ट्रेन नहीं है ना, अरकू वैली मतलब है डोम, आई थिंक इट्स एन, वो विस्टा डोम वाला ट्रेन है। नैरो गेज है ना। ओके, इतना पता है कि अरकू में विस्टा डोम है। ठीक है। देन ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, तो इसमें बृहदीश्वरा टेम्पल है एंड गंगईकोंडा चोलेश्वरम एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल एट दरसुराम, ये सारे चोला ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं। एंड हाँ, आगे चलते हैं। देन भरतनाट्यम, Abhinay Darpana by Nandikeshwara is one of the main sources of textual material known to be Ekaharya, where one dancer takes on many roles in a single performance. Okay. And Varnam, the most important composition of Bharatanatyam repertoire, encompasses both Nritta and Nritya. ठीक है, ये नंदिकेश्वरा है, अभिनय दर्पणा by नंदिकेश्वरा. ठीक है. Then Tanjore painting. Then Tanjore has a unique place in history of Indian painting in that it houses the 11th century Chola wall paintings in the Brihadishwara temple and also paintings from the Nayaka period. Subject of most paintings are Hindu gods, goddesses and saints. I'm not sure if this Nayakas were, there is one kingdom called Musunuri Nayakas. I think if it is the same people. नायकास का कुछ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी था ना? Okay, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी था। right. Then ठीक है, ये Bommalatam is puppets from Tamil Nadu known as Bommalatam. Combine the techniques of both rod and string puppets. Puppets are the largest, heaviest, and the most articulate of all traditional Indian marionettes, and comes under string puppetry. नहीं, बोमरिलो नहीं है, बोमलाटा है। बोमरिलो किसने बोला? अदिति बोल रही है बॉम्बरिल। सही है, वो सही मूवी है। ठीक है, तो वैसे हाँ, somebody tell me what is the puppet form in Andhra Pradesh? बॉम्मलाटा। Correct. So M आया है तो तमिलनाडु, बोम्मलाटम इज तमिलनाडु, बोम्मलाटा इज आंध्रा पपेट शो है। ठीक है, आगे। Tirukuthu. Then Tirukuthu is literally means street play, performed mostly at the time of annual temple festivals of Mariamman, rain goddess, to achieve rich harvest. There is a cycle of 8 plays based on the life of Draupadi. Performance is held in an open air theatre called Shabai. Then Jallikattu, a bull taming contest marks the main event of Pongal Day. Batukamma is Telangana. Then Mahamagam, a bathing festival at Mahamagam is a bathing festival at Kumbakonam in Tamil Nadu. तो ये कुंभकोणम में महामागम करके एक फेस्टिवल है, तो सेलिब्रेट्स वंस इन 12 years, ऑल्सो कॉल्ड कुंभ मेला ऑफ साउथ। ये शायद मतलब देर इज अ ह्यूज पॉन्ड और रिजर्वायर काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे पीपल कम एंड बेथ, टेक अ डिप। ठीक है, आगे। Tribes, Kotas, indigenous to the Nilgiri Mountains. Study of Todas and Kotas has also been influential in the development of field of anthropology. Women have a greater say in choosing their marriage partners than in any mainstream Indian village. ये है Kotas. So then Irulas reside in the northern districts of Tamil Nadu and in some parts of Kerala, have their origin from the ethnic groups of Southeast Asia and Australia. Irula Snake Cooperative
has revolutionized the treatment of snake bites in India and produces enough anti-venom to supply hospitals across the country. So Irulas, they provide anti-venom supply to hospitals and across the country. Okay, then Todas. Todas live in the Nilgiri Mountains. Study of their culture by anthropologists and linguists proved significant in developing the field of social anthropology and ethnomusicology. Toda embroidery products got GI tag. ठीक है, Toda embroidery has हाँ, got कभी देखा था थोड़ा एम्ब्रॉयडरी. right. हाँ, रेड एंड ब्लैक थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो. Okay, okay. So we have seen grizzled giant squirrel found in the patches of riparian forest along Kaveri River and in hill forests of Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala. Also found in Sri Lanka. Its nests were sighted by researchers for the first time at Pakkamalai Reserve Forest near Jinji. Okay. Then generally known to nest in foothills of Western Ghats, ranging from Chinnar Wildlife Sanctuary in Kerala to Aanaimalai Tiger Reserve and Palani Hills in Tamil Nadu, and in couple of areas in Eastern Ghats. Grizzled Squirrel Wildlife Sanctuary was established to protect vulnerable giant grizzled squirrel. Then threatened by habitat loss, ये वैसे अभी near threatened है, and high demand in pet trade. Then listed under the Schedule 2 of sites, listed under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Grizzled giant squirrel. आगे. Then humpback mahseer, species of freshwater ray-finned fish and is referred to as tiger of the water, found only in Kaveri Basin, including Pambar, Kabini, and Bhavani rivers. Kabini, can somebody tell through which areas does it flow? Nagarhole. Correct. So, and IUCN status है humpback mahseer का endangered. Then peacock parachute spider. So it is known. वैसे सॉरी टू इंटरप्ट, महासीर का काफी सारा स्पीशीज है ना. एक और हमने देखा शायद आई थिंक गैंजेस में भी मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में अलग मिलता है शायद से. ब्लू फिन मशीर देखा था, गोल्डन मशीर देखा था. ओके, राइट. सो ये पीकॉक पैराशूट स्पाइडर, कलर अच्छा है इसका, ब्लू. So known habitat is in degraded forest near Nandyala district in Andhra Pradesh. Then recently it was spotted in cave in Pakkamalai Reserve Forest in Eastern Ghats near Jinji in Villupuram district of Tamil Nadu. Jinji, बस Jinji याद रखना, Arcot, and वहाँ पे Pakkamalai River Reserve Forest है. Also known as Guti Tarantula. हाँ, वैसे this Jinji area यहाँ पे it's called Guti. This Jinji area is called poor man's Ooty. Guti. ठीक है. Then endemic to India. गरीबों का ऊटी. Correct, सच में गरीबों का ऊटी है गुटी. ठीक है. Considered as the biological pest controller. फिर IUCN status है critically endangered. आगे. ठीक है. नील कुरिंजी, native to Shola forests in Western Ghats, also seen in Chevroy Hills in Eastern Ghats. वैसे Chevroy Hills में भी नील कुरिंजी मिलता है. Anaimalai Hills and Agali Hills in Kerala and Sanduru Hills in Karnataka. Blooms once in 12 years, no smell or any medicinal value, categorized as endangered species, and Palian tribal people living in Tamil Nadu use this flower bloom as reference to calculate their age. So Palian tribal. Then Tamil Nadu government has announced scheme for its protection. Then Tamil Yemen. So locally known as Tamil Maravan, which means Tamilian warrior. Butterfly है, warrior. ठीक है. Tamil Yemen. Then officially declared as the state butterfly to symbolize its rich natural and cultural heritage.
aimed at boosting conservation efforts of attractive insects. Then Maharashtra was the first state to officially declare blue mormon as their state butterfly endemic to Western Ghats. ब्लू मॉर्मन महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया है. यह है तमिल यमन, तमिल वॉरियर. ठीक है. Pallikaranai marshlands, one of the last few surviving wetlands of South India and the only marshland ecosystem in Chennai city. State Forest Department has announced plans to open this up for the public. It is in line with the plans to revive and rejuvenate the wetland. ये है Pallikaranai marshlands. Then Kiladi. So this Kiladi is an urban settlement of Sangam age on banks of river Vaigai, published by Tamil Nadu Archaeology Department. Recent scientific dates obtained for Kiladi findings push back the date of Tamil Brahmi script to another century, that is 6th century. Okay. Vaigai river, does anybody remember? कहाँ पे है? Northern part, central part. मदुरई से जाता है क्या वाइगाई रिवर? सेंट्रल पार्ट में ना, Absolutely. कावेरी के नीचे. करेक्ट. मदुरई से जाता है वाइगाई रिवर. करेक्ट. कुछ तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वहां पे. मदुरई में? हाँ, जो नदी में उतर के उनको नहलाया जाता है वो गॉडेस को वगैरह. करेक्ट. उस फेस्टिवल का नाम पता वो नहीं. बाद में बता दूंगा मैं. ठीक है. तो दिस इज किलड़ी. आगे Dindigul locks. So known throughout world for their superior quality and durability. Abundance of iron in this region is a main reason for growth of industry. Government institutions such as prisons, godowns, hospitals, and even temple use these locks instead of other machine-made ones. Then Kandagi saris, manufactured in entire Karaikudi Taluk in Shivaganga district of Tamil Nadu. तो ये शिवगंगा थोड़ा मदुरई के पास है. ठीक है. southern central part of Tamil Nadu. Then made up of high quality cotton from Coimbatore. Cotton Coimbatore से लाते हैं. Usually worn in summer and manually made using winding machine, shuttle, loom, and bobbin. It is a team effort of families who live in the town of Karaikudi, and it forms part of their basic livelihood. आगे. This is Kandagi saris. Then Panchamrutam. It is an Abhishekam Prasadam. In Tamil, term Pancha means 5 and Amritam means delicacy. One of main offerings of Lord Dandayudapani Swami, the presiding deity of Arulmigu Dandayudapani Swami temple situated on Palani Hills. ये है Palani Hills में Panchamritam, and the deity is Dandayudapani. ठीक है. Dandayudapani. Erode, so erode is the turmeric I was talking about. So वैसे you said Salem, right? It is. Yeah, Salem. तो क्या है ना, erode and Salem are side by side districts. हाँ, आजू बाजू में है. So grown in hot, moist conditions prevalent in the area with temperature ranging from 20 degrees to 37.9 degrees, with an average of 600 to 800 mm rainfall in a year. Erode is a city in the state of Tamil Nadu, receiving GI tag after a long and cumbersome process which lasted for about 8 years. That is Erode turmeric. Next. ठीक है. ये है न्यूट्रिनो, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट. So we know what is neutrino. So it's a subatomic particle, just like your protons and neutrons. And so इसमें this is an underground project. So पढ़ लेती हूँ पहले. Proposed research facility to be constructed close to the Western Ghats led to concerns over its impact on eco-sensitive zone. So ये कस्तूरी रंगन कमेटी वेस्टर्न घाट्स के लिए उन्होंने कंक्लूड किया the site wasn't an eco-sensitive region
and the NGT has always awarded, NGT has also awarded clearance for its establishment. तो NGT कस्तूरीरंगन और NGT से clearance मिल गया है इसको. Then proposed observatory site will study the properties of elementary particles called neutrino using a larger detector to be constructed in an underground research facility. ये underground में है. And INO will study atmospheric neutrinos only. So the India-based neutrino observatory will be surrounded by at least a kilometer of rock on all sides to shield against other radiation that could swarm the detector. फिर इसमें iron calorimeter है, calorimeter, and 50,000 tons, 140 layers. हाँ, वो थोड़े मोटे फैक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव दे दो, बाकी तो टेक्निकल डिटेल इतना काम का नहीं. करेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो वही है कि it wants to study elementary particles called neutrino. And इसका uses कोई बता सकता है क्या? बस वो इस एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करना है. न्यूट्रिनोज जो है उनके बारे में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं, तो एक तो ये थोड़ा सा है. एंड दे कैन ट्रैवल थ्रू एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज हमारी बॉडी में भी लगातार पास होते रह रहे हैं न्यूट्रिनोज एज वी टॉक. तो यही है, तो इनका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए है कि एक्चुअली क्या है, किस टाइप की प्रॉपर्टीज है. ठीक है, दैट्स इट. क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करते हैं ना, तो फिर बेसिकली उससे वो पता लगता है कि सन को मतलब लाइक व्हाट इज सन मेड ऑफ. हाँ, सो वो सब भी स्टडी कर सकते हैं. So with that we are finished with Tamil Nadu. किसी को कुछ और ऐड करना है? एक कोडाईकनाल के बारे में एक बताना था. इट्स अ मैन मेड लेक. ठीक है, ये PYQ में कहीं पे ऑप्शन में भी आया था. तो कोडाईकनाल कहाँ पे है? कर्नाटका नहीं, तमिलनाडु में ही है. तमिलनाडु में है, नीलगिरी पता है. हिल्स में है. कोडाईकनाल इज इन नीलगिरी हिल्स. ये बैंगलोर वाले बड़ा घूम के आते हैं उसमें वहाँ पे भी एक कोई ऐसा फ्लावर्स का बूम होता है. एवरी 12 इयर्स होता है वो, कुछ तो भी ऐसा है. फ्लावर्स का कुछ तो भी ब्लूमिंग होता है एवरी 12 इयर्स. बाम्बू का कितने सालों में होता है? बैम्बू भी 12 सालों में होती है एक बार फूल. 50 सालों में होती है बैम्बू. ओह सॉरी, कुछ एग्जोटिक फ्लावर की बात कर रहा हूँ मैं. नहीं पता. नील कुरुंजी ही 12 सालों में जो नीलगिरी में होती है, और दूसरा तो नहीं पता. मैं कहीं पे पढ़ा था, वो देख के बताता हूँ मैं. ओके, हैप्पी बर्थडे संजय. अच्छा, ये नेशनल पार्क देख रहे हैं क्या? अरे संजय, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू ब्रो. यार नेट में तो 5 से 7 साल ही दिखा रहा है बाम्बू. अरे ठीक है, थैंक यू दीप्ति यार, बहुत बड़ा स्लाइड था ये आपने. हाँ दीप्ति, थैंक